71 साल की इस महिला ने अपनी गर्दन की दर्द से, जो कि उनकी बाजू तक जाता था, जिन्हें के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल डिस्क डिजीज था, उन्होंने कैसे अपनी दर्द से मुक्ति पाई, इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 71 साल की इस महिला ने कैसे अपनी गर्दन के दर्द से, जो कि इन्हें बाजू तक जाता था, मुक्ति पाई। इस महिला को बहुत देर से दर्द थी गर्दन में और धीरे धीरे ये बढ़ती गई। इनके काफ़ी इलाज करने के बावजूद ये दर्द बढ़ती गई। एमआरआई कराने पर उन्हें पता चला कि उन्हें स्लिप डिस्क है, जो कि उनकी नस को इतना ज़्यादा दबा रही है कि उन्हें बाजू में भी दर्द जा रहा है और इस वजह से वह अपने कामकाज नहीं कर पा रहे थे, बाजू मूव नहीं कर पा रहे थे। ये इस हद तक पहुंच चुका था कि पेन किलर्स खाने के बावजूद अपनी बाजू तक वह हिला नहीं पा रही थी। और ऐसी स्थिति में ये हमारे पास आई। हमने इनको देखा और बहुत सारे स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद भी इन्हें जो है वह आराम नहीं था। हमने इन्हें एक प्रोसीजर की सलाह दी जिसे कहते हैं मिप्सी प्रोसीजर। मिप्सी प्रोसीजर करने से पहले इनकी हालत कुछ इस तरह थी। And what all complaints you had? What all issues you had? Since December, I've had this because I've had this cervical spondylitis. I've got a nerve impingement, and my right arm, right from my shoulder to the fingertip, is very painful. Sometimes it is a dull ache. Sometimes it's excruciating pain. Have you tried any medicines for this? Yes, I have. So I have you was got any? Under his medication. Okay. He asked me to take some calcium injections also. He given me a nerve tablet for a month. Okay. And I have done some sessions of physiotherapy. Okay. But none of it helped. So I contacted him again. Okay. And he said that I should see a pain specialist. Okay. So now what procedure has been planned for you? The cervical epidural neuroplasty has been. Okay. Okay. So today you'll be undergoing a cervical Today epidural. I'm going to undergo that. Okay. Under Dr. Siddharth. Under Okay. Dr. Siddharth Verma. Okay. Fine. Yes. Thank you. तो ये जो मिप्सी प्रोसीजर है, इसकी सब टाइप जो हमने इन्हें एडवाइस की वह थी सर्वाइकल एपिड्यूरल न्यूरोप्लास्टी। तो इस पेशेंट में एक स्पाइन एंड पेन फिजिशियन होने के नाते हमने इन्हें एक ऑप्शन दिया और इस ऑप्शन को इन्होंने अपनाया। इस प्रोसीजर में मरीज को उल्टा लिटाते हैं, एक सुई से उनकी चमड़ी को सुन्न कर देते हैं ताकि उन्हें दर्द महसूस ना हो। फिर एक सुई के ज़रिए अंदर जाते हैं जहाँ तक कि हम उस नस के पास ना पहुँच जाएं। उसके बाद एक्सरे के अंदर देखते हैं कि क्या हम उस नस के पास पहुँच गए। फिर एक ऐसी दवा देते हैं जो हमें एक्सरे में फैलती हुई दिखती है और हम कैथेटर को डालते हैं जिसपे वो एक पतली तार जैसी होती है। उसके ज़रिए हम अपने डिज़ायर्ड लेवल पर जहाँ पर कि इनको कंप्रेशन है वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद हम जो मेन दवा है उसे वहाँ दे देते हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर समाप्त हो जाता है। इस प्रोसीजर के बाद मरीज जो है उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। I have this acute spondylitis, the cervical spondylitis. So I had gone to see a spine specialist, but unfortunately the medication and the physiotherapy and all did not really relieve me of my pain. So he requested me to see a pain specialist. I went to see Dr. Siddharth Verma, and he had to carry out a procedure. Cervical epidural neuroplasty. Yeah. That was done yesterday evening, and there is a lot of relief since then. And I am advised to go a little slow and be careful. So what was the condition before the procedure and after the procedure? Oh, before the procedure, I was in a lot of pain. Now it's at the most, I would say 10% of that at the moment. So that means it's almost a 90% Yeah, pain. yeah. Have you been told to do exercises and all that? Yes, but a little later, not right away. Maybe a week or so later, after doctor has advised my physiotherapist as to what to carry out. Great. So if somebody has this similar problem, what will you suggest to them? Is this a good procedure or were you scared, or can you just... I was not so scared as I was worried about the pain and how my hand would, remain during the procedure, because
when there is a lot of pain, it's very difficult to get a comfortable position. And since I cannot have anything on, not even intravenous on my left arm, everything would be on the arm that was hurting. So I was a little scared because of that. Okay, and what was your actual experience? Arm was hurting, of course, a lot, but I could move it here a little bit here and there in between when the procedure was not going on at that time, and I was asked not to move at all when it was being done, so it was okay. Okay, and after that, now today it's one day, almost 24 hours. So how's your pain and how is the movement of the arm now? Movement of the pain is out, and 90% of the pain is not there at the moment. दोस्तों, एक जो मरीज है जिसे दर्द है, वह मरीज खुद ही नहीं तड़पता बल्कि उसके परिवार वाले भी साथ में तड़पते हैं। तो इनके जो पति हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में, इस प्रोसीजर के बारे में, आइए सुनते हैं। So your wife had this pain with which she came. So how is she now, and what do you like to say? Her pain started in December last year, and again when we were with my daughter in Dubai, it went down and accelerated quite a bit. And after we got back in the month of June, it was unbearable. So the second visit, finally he said, you consult a pain specialist. We contacted her cousin, suggested, gave your reference, and that's how we went about the business. So what's your experience? How you're feeling now? The overall process? I think so far, according to what she says, she's feeling pretty good, and that's good for me. Okay, great. Any suggestions which we can improve upon or anything? Look, you're the doc. How can I suggest what you should do? Because I am seeking a feedback from you. I've got no feedback. Okay. Things worked out well, and I'm very grateful to all of y'all and yourself. Thank you. Were you scared when the procedure was being done? Anything that happens to us scares me. No question on that. Okay, and what was after you saw her? I felt good. Great. Thank you so much. Thank you. तो आपने देखा, अगर किसी मरीज को ऐसी तकलीफ हो जिसमें कि गर्दन में दर्द है उनको और वह उनकी बाजू तक निकलता है, तो उनके लिए ये प्रोसीजर कितना फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे सब मरीजों के साथ इस प्रोसीजर को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर नए ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिसमें हम नई से नई तकनीक के बारे में आपको बताते रहेंगे, जिससे कि आप दर्द से निपट सकते हैं। याद रखिए, गर्दन के और बाजू के दर्द में तड़पते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। योर सफरिंग इज ऑप्शनल।